Okay, let's start. Yesterday we gone through the project called training management system और साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें पेज लेआउट एंड सर्च लेआउट इसके बारे में समझा. Now let's open your application called TMS. So to do that, go to your app manager and you need to search for TMS. I'm going to open this TMS into a new tab. Okay, so go to your tab. Now you can see we have a various tabs present over here in my application. I have a students. Okay, I have a trainers. Then we have courses with us, and then we have a purchases. Okay, so we have already done with the purchase operation. Now इधर ना अगर आप एक्सेल शीट को देखो तो इधर एक फील्ड कोर्स के अंदर हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है एंड दैट फील्ड नेम इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर एंड वो था हमारा रिलेशनशिप. नेक्स्ट फिफ्थ रिलेशनशिप कॉल्ड सॉरी फोर्थ रिलेशनशिप कॉल्ड एज roll up summary. Okay, and that roll up summary is not now available over here. We don't know how many students are there uh, which is registered for that particular course. तो ML के लिए कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, देन अदर कोर्सेज है जैसे एपेक्स प्रोग्रामिंग के लिए कितने लोगों ने एनरोल किया है, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कितने लोगों ने एनरोल किया है, ये यहाँ पे हमको काउंट नहीं दिख रहा है. एंड टू डू दैट वी नीड टू गो टू द रोल अप समरी टू क्रिएट सच अ फील्ड. अब देखो, व्हेन वी आर एबल टू अप्लाई दिस रोल अप समरी, तो पहले तो रिलेशनशिप होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. कौन से ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप आएगा? सो बेसिकली द कोर्स इज एक्चुअली गोइंग टू परचेज बाय द स्टूडेंट्स. ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट परचेज दिस पर्टिकुलर कोर्स और हाउ मेनी पीपल परचेज दिस कोर्स, ये हम लोगों को चाहिए. सो वी रिक्वायर्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन कोर्स एंड परचेज, राइट? एंड व्हेन वी अप्लाई दिस रिलेशनशिप, एक तो कंडीशन हो गया हमारा कि रिलेशनशिप होना चाहिए, बट कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? सो बेसिकली वी हैव टू रिलेशनशिप ओवर विच वी परफॉर्म द ऑपरेशन. पहला होता है लुकअप रिलेशनशिप और दूसरा होता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई रोल अप समरी, देन यहाँ पे कोर्स और परचेस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होना चाहिए. अगर आप लुकअप रिलेशनशिप अप्लाई करते हो और फिर उससे ऊपर से रोल अप समरी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, देन रोल अप समरी कैलकुलेट नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, या फिर आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि ये लुकअप रिलेशनशिप कहता है कि मास्टर का डेटा चाइल्ड के अंदर मैंडेटरी नहीं है, वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर पेरेंट का डेटा चाइल्ड के अंदर है ही नहीं, तो चाइल्ड से आप लोग पेरेंट के सॉरी चाइल्ड का डेटा आप पेरेंट के अंदर कैसे फेच करोगे? मैंडेटरी अगर नहीं है तो. सो रोल अप समरी कैलकुलेशंस नहीं दे पाएगा, इसीलिए आप वो अप्लाई नहीं कर पाओगे. So there should be a mandatory relationship between these two, and that mandatory relationship is nothing but a master detail relationship. Okay, but if you try to do all those things with the help of lookup relationship, then it is not going to apply over here. So we required a master detail relationship, and then we apply a roll up summary on a मास्टर टेबल. अब देखो, बेसिकली लुकअप और मास्टर डिटेल में क्या होता है? सो यू कैन सी परचेस इज अ चाइल्ड एंड कोर्स इज द मास्टर. तो जैसे मैं परचेस में जाता हूँ, इफ आई ओपन एनी वन ऑफ द परचेस, तो मुझे चाइल्ड के अंदर मास्टर यानी कि हमारा कोर्स, इसके कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे. तो वी आर एबल टू फेच ऑल द डेटा फ्रॉम द मास्टर टू द चाइल्ड. सो अब यहाँ पे लिंक आ गया. ओके, इफ आई क्लिक ऑन दिस, आई विल गेट द कंप्लीट डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. इसका मतलब क्या है? मास्टर का कंप्लीट डेटा चाइल्ड में आता है व्हेन यू हैव अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. लेकिन अगर आपको चाइल्ड का डेटा मास्टर में चाहिए, तो वो डेटा आप यहाँ से यहाँ पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप या फिर लुकअप रिलेशनशिप से नहीं ले सकते हो. तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू नीड टू यूज अ रोल अप समरी. सो रोल अप समरी क्या है? रोल अप समरी इज बेसिकली प्रोवाइड अ डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट. ओके,
जब हम लोग चाइल्ड से पेरेंट की तरफ डेटा भेजते हैं तो वो कंप्लीट डेटा कभी भी नहीं भेज सकेंगे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ समराइज्ड फॉर्म में डेटा भेजना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर फील्ड इज और दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज रोल अप समरी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, समरी रोल अप करना पड़ेगा और वो इंफॉर्मेशन आपको भेजनी पड़ेगी। ओके, नाउ प्रैक्टिकल में जाते हैं तो और अच्छे से समझेगा। नाउ वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन कोर्स एंड परचेस, and the course is actually going to be purchased by the student. So what we need to do, we want a field in a course object जो परचेस का डेटा यहाँ पे फेच करेगा। तो हमको कौन से ऑब्जेक्ट में जाना है, सो पास साइड में जाएंगे, गो टू योर ऑब्जेक्ट मैनेजर, और अब यहाँ पे कोर्स नाम का ऑब्जेक्ट हम लोगों को सर्च करना है। इधर हम लोग एक फील्ड क्रिएट करेंगे with the name number of students, and to create a field we know we need to go to the fields and relationship, and then we need to click on new to create a new field. So इधर हम लोग एक field create करेंगे। Now you can see there is a field called roll up summary over here. This is available with us. You can choose this roll up summary and create your data. But if I try to create a roll up summary for a purchase, okay, which is a child, okay, तो परचेस में अगर जाएंगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाके अगर हम लोग इस तरह से कोई डेटा क्रिएट करना चाहते हैं, फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। तो नाउ यू कैन सी दिस रोल अप समरी इज नाउ ग्रेड आउट। इधर ग्रेड आउट है, ये आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, आप इसके ऊपर रोल अप समरी अप्लाई नहीं कर पाओगे, मतलब चाइल्ड पे रोल अप समरी नहीं जाएगा। रोल अप समरी इज ऑलवेज अप्लीकेबल फॉर योर मास्टर object, and the master object over here is your course. So go to your course, go to fields and relationship. Now let's create a field for this particular object by using this new button. So click on new to create a new field in an object, and then you need to choose this particular option called roll up summary, क्योंकि हमको क्या चाहिए, चाइल्ड का डेटा पेरेंट में चाहिए। सो चाइल्ड कौन है, परचेस, तो परचेस का डेटा हमको चाहिए। सो नेक्स्ट, click on next button, then it will ask you about the label, let's say number of or number of student, let's say register. Okay, so this is the field label which I am providing to this particular field. Okay, now the field name is automatically going to populate. Then you need to click on next. Now it will ask you कि समराइज ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को आपको समराइज करना है। तो एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो आपको इस तरह से लिस्ट में से चूज करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट courses is only connected with the purchase with a master detail relationship, that's why summarize object में सिर्फ एक ही ऑप्शन आया। लेकिन अगर आप कोर्स एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ में मास्टर डिटेल में लगाओगे तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस आएंगे, फिर उसमें से आपको ऑब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू चूज परचेसेस एज एन ऑब्जेक्ट। तो कोर्स इज getting a data, summarized data from the purchases. Now you can see at the downline you can say select roll up types। तो आपको रोल अप करने के लिए टाइप दिए गए हैं, तो उसमें आपके ऑप्शन है काउंट, सम, मीन, मैक्स। वेयर एज काउंट के बाद में एक लाइन दिया गया है, एंड ऑल द डेटा विच इज रिलेवेंट विद द काउंट इज डिनोटेड बाय द ब्लू लाइन्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय द पिंक लाइन, if I'm not wrong। तो सम, मीन, मैक्स के लिए पिंक लाइन है। So what is the difference between these two, why they are bifurcated with each other? Because whenever you choose a count, तो ये रिकॉर्ड के ऊपर काउंटिंग लगाता है। Okay, so whatever the operation is going to be performed, that is performed on a record, so complete records पे operation perform होगा। But if you try to apply these operations, मतलब sum करना है, mean करना है, max करना है, तो बेसिकली ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ऑन अ फील्ड्स। तो आप जैसे ही सम करोगे तो कौन से फील्ड्स का सम आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। कौन मीन मैक्स में क्या होगा, कौन सी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए वो फील्ड आपको चूज करने पड़ेगा, उस फील्ड का मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मैक्स चाहिए तो
उस पर्टिकुलर फील्ड का मैक्स वैल्यू रिटर्न करेगा. दैट्स व्हाई वी नीड टू चूज द एग्रीगेट फील्ड फ्रॉम हियर. सो दैट्स व्हाई दीज टू थिंग्स आर बाइफरकेटेड. ये नीचे के तीन ऑप्शंस किस पे वर्क करेंगे, फील्ड्स पे वर्क करेंगे. एंड द ऑप्शन विच इज प्रेजेंट एट द टॉप, it is works on the record. So basically what we need to do, we need to just count the number of record जो उस पर्टिकुलर कोर्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट काउंट एज एन ऑप्शन. Then filter criteria, all records should be included in the calculation. Yes, I want to include all the records in a calculation. और या फिर आपको कुछ सर्टन क्राइटेरिया अगर आपको मीट करके जो रिकॉर्ड्स मिलेंगे वही कैलकुलेशन में लेने हैं, तो आप ये सेकंड ऑप्शन चूज करके इधर क्राइटेरियाज अप्लाई कर सकते हो. लेट्स से कि ये फील्ड, इसमें ये रेटिंग होना चाहिए और ये होना चाहिए. ये जो जो रिकॉर्ड्स मैच करेंगे वो रिकॉर्ड्स कैलकुलेशन में आएंगे. ठीक है. बट राइट नाउ आई वांट ऑल द रिकॉर्ड्स टू बी included in a calculation. That's why I'm going to select the first option. Let's click on next. Now once you click on next, it will ask you about to which particular profile you want to show this particular field. अभी हमको ये शो करने का है सिर्फ to the system administrator. That's why I'm going to select system administrator as a profile. Then click on next, and at the last it will say कि ये आपका field आपके course layout के अंदर ऐड कर दिया गया है. Now click on save. Now your field is ready with the roll-up summary. Now go to your SaaS side. Let's refresh this. Now let's try to open one of the course present over here. Let's try to open the C002. If I click on it, then you can see number of student register, that is equals to 2. Right? तो इसका मतलब क्या है, सेल्सफोर्स एडमिन ये कोर्स के लिए कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, 2 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है. अब क्योंकि ये रोल अप समरी है, ये कंप्लीट डेटा चाइल्ड का कोर्स को भेजेगा नहीं, मतलब चाइल्ड का डेटा पेरेंट को भेजेगा नहीं, ये सिर्फ समराइज फॉर्म में भेजेगा. इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस डेटा इज रीड ओनली डेटा एंड इसमें कोई लिंक नहीं है. ये आप कनेक्ट क्लिक करके परचेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो. आपको ये पता नहीं चलेगा कि दो स्टूडेंट कौन से 2 स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्सेस ना ये पर्टिकुलर कोर्स परचेस किया है. ओके, बट वेयर एज आप परचेस में जाओ और कोई ट्रांजेक्शन्स को अगर आप ओपन करते हो तो ये हो गया चाइल्ड एंड कोर्स हो गया मास्टर. तो चाइल्ड में से मास्टर का कंप्लीट डेटा यहाँ पे एक्सेस हो सकता है. दैट्स व्हाई द लिंक इज अवेलेबल ओवर हियर, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन इट you can see the complete information of your child, of your parent from your child. So this is all about the roll-up summary. I hope you'll understand the concept of roll-up summary. With this we finish up with the 4 relationship. पहला आता है सेल्फ रिलेशनशिप, दूसरा आता है लुकअप रिलेशनशिप, तीसरा हमने देखा मास्टर डेटा रिलेशनशिप, और आज हमने डिस्कस किया अबाउट रोल अप समरी. सो 4 हमारे रिलेशनशिप्स हमारे यहाँ पे कवर अप हो चुके हैं. Now next I am going to talk about the next relationship called many to many relationship. And to understand many to many relationship, I first of all I need to go to the schema builder. Okay, open the schema builder. और जैसे मैंने बोला था कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. नाउ लेट्स सी हाउ द relationship is going to be created over here. Let's say custom object. Rest of the object हमको नहीं चाहिए. उसमें भी इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं. Now ठीक. Now we know that student is a master of purchase, right? And we also know that course is a master to the purchase. Now you can see this. Now here इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं नजदीक लाके, ताकि वो कंफ्यूजिंग ना हो, आपको दिखाई दे. Let's zoom this. Now you can see
this particular student is now connected with the purchase with a master, and this course is also connected with this purchase with a master. Now you can see this particular course can be purchased by the many of the students, and single student can purchase a many courses. So इधर देखो, इधर ये many to many relationship आपका आ चुका है. Now the object present over here, this object is called a junction object. Why it is called a junction object? Because this object is used to connect the two objects, okay, with the help of master detail relationship. Now you can see this student is connected with the purchase, this course is also connected with the purchase. So by using that, we are able to perform the operations. Okay, तो ये क्या है? ये हमारा junction object है. You can see course is a master detail, so ये हो गया master, and student is a master detail, so ये हो गया master. तो इधर many to many relationship कैसे है? तो देखो, many student can purchase a single course and single course can be purchased by many student, ऐसा भी बोल सकते हैं, and single student can purchase a many courses. Okay, so there is a relationship now is automatically established between these two objects called course, student and course. और ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. ओके, क्यों? क्योंकि सिंगल स्टूडेंट कैन परचेस मेनी कोर्सेज और सिंगल कोर्स कैन बी परचेज बाय मेनी स्टूडेंट. सो it is a many to many relationship, or many student can purchase many courses. So you can say that it persists the many to many relationship. Okay, so इसमें ये जो मास्टर्स है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरफेस ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं जंक्शन. सो बाय यूजिंग दिस जंक्शन you are supposed to connect these two objects together. Okay, and the relationship which we create over here, that is called many to many relationship. Now I hope you will understand this concept of many to many relationship. ये हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जिस तरह से आपके रिलेशंस डिफाइन हो गए उसके अकॉर्डिंग टू ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकता है. सो वी cover up the 5 relationship now. As we know, self, lookup, master detail, roll up, and the last one is called many to many relationship. अब जो लास्ट बचा है 6th नंबर का, that is your hierarchical. Hierarchical relationship basically works when we create a users. Okay, so यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, जब हम लोग यूजर्स क्रिएट करेंगे तब मैं आपको हायरार्चिकल रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू एस्टैब्लिश अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, देन जो जंक्शन ऑब्जेक्ट आपका है जैसे कि परचेस, उसके लिए टैब की जरूरत नहीं होती है. नाउ यू कैन सी वी हैव अ टैब कॉल्ड परचेस ओवर हियर. ओके, बट लेकिन but if you have a many to many relationship between these two object by using this purchase, तो ये purchase tab की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसके अंदर की फील्ड की भी जरूरत होगी, लेकिन टैब जनरली हम लोग टैब नहीं लिखते हैं, हम इस टैब को डिलीट कर देते हैं. वाई? बिकॉज कोर्स के थ्रू आप परचेस कर स्टूडेंट के थ्रू आप परचेस करोगे या फिर कोर्स आप असाइन कर सकते हो टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट. सो ये परचेस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टू tabs or two object. That's why we are supposed to delete these purchases. Now you can see, go to your object manager, sorry, go to your setup, okay, and search for a tabs, search for a tabs, go to your tabs. You can see we have a tab called purchases. इसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि we have established a many to many relationship, and many to many relationship में जो junction object होता है उस junction object का tab हमको नहीं चाहिए, या जनरली हम लोग लिखते नहीं है. So what I'm going to do, I'm going to delete this tab because I no longer require this tab. So I'm going to delete this. Fine. Go to your SaaS and let's refresh this. Now you can see the tab with the name purchases is now no longer available with us.
अब तो क्वेश्चन ये होगा कि सर ठीक है आपने तो डिलीट कर दिया, बट आई वांट टू परफॉर्म द ट्रांजैक्शन, मुझे परचेस करने का है तो मैं कैसे करूंगा? सो गो टू योर स्टूडेंट सिंपली, ओके, एंड चूज एनी वन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट वो कोर्स को परचेस करना चाहता है वो स्टूडेंट को हम ओपन करेंगे। लेट्स से राजेश वांट टू परचेस सम कोर्स, ओके। So when you go there, you have a related object or related field over here or option over here. You just click on related option. Let me see somewhere. Let me refresh this. Go to your related. Okay, let me check in a courses whether I have the option for the purchase over here or not. You can't see anything over here to perform the purchase operation, right? Just need to click over here and see whether the purchase options is there or not. Okay, let's try to check whether the purchase object is now available. When we go to this, we have new contact opportunities, cases, lead, sharing, hierarchical. Okay, nothing is displayed over here. Let me go to the pass side. Okay, let's go to your tab called student. Let's edit this. Let me check, is there any option available over here? So basically क्या होता है कि ये कोर्स परचेस नाम का जंक्शन ऑब्जेक्ट डिलीट करने के बाद में ये रिलेटेड का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ओके, लेट्स ट्राई टू ऐड अ न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू एंट्री इनटू दिस। लेट्स से कोर्स नेम को सब स्टूडेंट नेम इज राहुल, email id is rahul@gmail.com. Let's have assign a degree, mobile number something, username is rahul123. Let's have a password, rahul@123, and the country, let's say India, is belongs to Andhra Pradesh. Let's click on save. Now this particular student want to perform a purchase operation, then you need to go to the related. Now no data is appear over here. Let's go to here. लेट मी चेक, हाँ मैं बता दूंगा आपको, कोई इतना हेवी टास्क नहीं है, क्यों नहीं आया तो वो हाइड हो चुका होगा। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई वो नहीं जा दिखा रहा है। ओके, सो गो टू योर ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्टूडेंट, go to object manager. Let me explore those things. Go to your new tab, search for a student, go to your page layout, student layout. Let's click on button, submit approval, send survey, quick action,
quick action, purchase, 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 purchase. स्टैंडर्ड बटन में भी नहीं है. ओपन एक्टिविटी, सब्जेक्ट, हिस्ट्री. ओके, दिस परचेसेस ओवर हियर. ओके, रिलेटेड लिस्ट, ये परचेसेस इधर आ चुका है. बिकॉज ऑफ दिस, चलो मैं इसको ऐड कर देता हूँ इधर रिलेटेड लिस्ट में. So this is my related list. I'm going to drag and drop this into a related list. So now the purchase is now available. Let's quickly save this. ये options हमारा unhide हो गया, hide हो गया था. Now let's go to your student and let's refresh this. अब जहाँ पे भी related to होगा वहाँ पे वो option आ जाएगा. So this is related. Go to your related. Now you can see you have an option called purchases over here. Okay, it took some time for me to find out, but I got this thing. So you can see we have now option called purchases. Now that particular student with ID 007 can now perform the purchase operation, and to do that just need to click on new, select a course that you want to purchase. Then student ID is automatically popped up over here. Let's say mode of payment is uh, cash, right? Rating is automatically there, and let's apply some discount, let's say 20% discount, and let's quickly save this. Okay, now you can see we have a purchase to that particular student. तो ये student ने क्या purchase किया ये यहाँ पे लिख के आया. Okay, you just click on that, you will get the complete purchase detail information about that student. So that student purchased C003 as an course. The mode of payment is cash. He rated the course as a 5 star. Then discount is of 20%. 8,000 rupees का course था, 20% discount लगाया, 1,600 discount मिला. The selling price is 6,400 rupees. So this is the pretty much simple way to do these things. Okay, now you can go to your subject, sorry, student, and you can see you can perform in as many as purchase operation as you want by going to this related option, and you can perform purchasing from here. Similarly ये सारी चीजें courses के अंदर भी reflect हो जाएगी, but right now it is not going to show anything in a related. तो उधर वापस आपको इधर जाने का है पेज लेआउट के अंदर. कौन से ऑब्जेक्ट के लिए जाने का है. Now you go to your course object and then just open this course object. अभी ये show क्यों नहीं किया, क्योंकि I think we create that purchase object by using a schema builder, right? That's why उसकी visibility hide हो गई थी. Let's go to the page layout and just click on course layout. Okay, and you can see the related list over here where we have purchases. You just drag this and put it into the related list. Now just quickly save this and click save. Go to your courses now, open the course, go to the related object, refresh this. Now you can see we have a purchase option over here. तो इधर आपको दिखेगा कि ये particular course like 003 is purchased by the two students. Okay,
तो इधर क्या मिलेगा, दो स्टूडेंट्स ने परचेस किया, कौन से दो स्टूडेंट ने परचेस किया, तो इधर उसके ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से स्टूडेंट ने ये कोर्स आपका परचेस किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो हमने अभी जो कवर अप किया, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट इज एमवीसी इन MVC in your Salesforce. So basically, we cover the these following things. That is, we create an app, we create a tabs, we create a S object, we create a fields, and we create a relationship. Then we create a data. Now we divide these things into a two parts. First part, app, tab, S object, fields, and relationship, and second part is your data. So what is my app is denoting? App is denoting the idea behind the business, or the it reflects my business application basically. What is tab? Uh, Basically, tab is representing your data. Okay, what is S object? It is a key entity of your business. What is field? It reflects the transactions relevant with your business. And relationship क्या denote कर रहा है? Relationship बेसिकली यूज किया जाता है डेटा रिडंडेंसी वगैरह, या फिर डेटा डुप्लीकेशन हम लोगों को कम करना है, तो हम लोग रिलेशनशिप यूज करते हैं, विच कनेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. ओके, एंड वी नो दैट इन अ बिजनेस दीज थिंग्स आर फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होती है, और इसको चेंज भी करना है तो एक बोर्डर मीटिंग वगैरह होगी, फिर उसके बाद में वर्किंग स्टाइल वगैरह चेंज होता है. ओके, बट मेजरली ये चीज चेंज नहीं होती है, ये चीज फिक्स होती है, ये rigid होती है. That's why these things is called as a structure or a schema. Okay, whereas we call data as an instance. Why we call data as an instance? Because it is changeable. Data can be changed. Okay, अभी आज हमारे पास में एक कस्टमर है, कल दूसरा कस्टमर आएगा, तीसरा तीसरे दिन तीसरा कस्टमर आएगा. सो डेटा कैन बी चेंज, but this scheme is not changed. Okay, that's why these things is called structure or a schema. Now if you look at this particular thing, तो app के बाद में हमने tabs लिखा और फिर s object लिखा. बेसिकली ऐप के बाद में हम एस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर टैब्स बनाते हैं. देन व्हाई वी राइट दिस टैब इन बिटवीन दिस टू? द रीजन इज दैट वी आर लॉजिकली कनेक्ट योर एप्लीकेशन with your S object by using tabs. Okay, so tab is now connecting these two things together. इसीलिए apps इसके बाद में हमने लिखा tab और उसके बाद में हमने लिखा S objects. It denoted that app is connected with the S object with the help of tabs. Okay, and then we talk about the fields. We know that fields is nothing but the or reflecting the transactions, and relationship is basically work for the avoidance of data inconsistency. Okay, so this is all these things are basically put it into the model. Okay, so what is MVC stand for? It is stand for model view controller. तो अभी हम लोगों ने जो पोर्शन कंप्लीट किया, दैट इज योर मॉडल. साथ ही साथ हम लोगों ने पेज लेआउट देखा, वेयर वी ऑर्गेनाइज द डेटा, दैट इज नथिंग बट योर व्यू. Okay, so we cover up with the some part of your view and all the portions relevant with the model. Now in upcoming lectures we are going to talk about this controller, means we are going to talk about the validations. Okay, so there are two type of validation. One is custom validation and second is a standard validation, which we are going to cover under the heading called controller. So मॉडल के बाद में कंट्रोलर कवर अप करेंगे, और फिर इधर जो कुछ भी चीज बचता है वो, एंड देन वी end up with this MVC structure of a Salesforce. So I hope you'll understand the MVC structure, model view controller. Okay, view is basically given to the end user, जिसका यूज करके वो एंट्री करता है. सो पेज लेआउट हमारे पास में होता है, इसका यूज करके हमने डेटा एंट्री किया. That entry should gone through these two validation. For example, mandatory thing है और आपने दिया नहीं, तो बोलता है कि डेटा एंट्री करो वो मैंडेटरी फील्ड के अंदर. So this data is going to enter over here and gone through this validation, means controller उसको check करता है. If all is correct, then that particular data is transferred to your model.
where we are going to store this data by using this schema. So this is nothing but the MVC in a Salesforce. So with this I am going to conclude today's lecture. As I promise you कि आज मैं थोड़ा सा portion cover up करूँगा. So I am going to conclude today's session where we learn about uh, roll up summary, many to many relationship, as well as we learn about how to add if one of the content is hidden from your page layout. Okay, and then we talk about the MVC structure.